Very good morning to all my dear students. Today in the science, I welcome back in the science class, and today we'll be starting a new lesson. Right now you saw the video in which we did the textual exercise of lesson number 9. In continuation with that lesson only is your lesson number 10, which is the water cycle. Now here in the last lesson, that means in the lesson number 9, we studied about the different sources of water, and how to clean the water, which water is consumable or potable water, then how the water gets polluted. So all these things, then what are the different uses of water, all these things we studied in last lesson. Now in the lesson number 10, the water cycle, which in this we will see the different forms of water. पानी के अलग अलग कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिसको कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफाइन करते हैं. सो उसके बारे में पढ़ेंगे. और जो बारिश होती है वो वाटर साइकिल का एक हिस्सा है. तो कैसे जो है बारिश हमारे अर्थ पे जो बारिश गिरती है, हमारे पृथ्वी पे जो बारिश गिरती है, तो वो वाटर साइकिल कैसे फॉर्म होती है और कैसे बारिश गिरती है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. सो इट्स अ लिटिल बिट एक्सटेंशन ऑफ द लेसन नंबर 9. How we get the water on the earth through rain, and what all are the different forms of water that we can have. So 3 different forms of water are there. See, all the things, there are many things which are either liquid, some are in the gaseous form, some are in the solid form. तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स अलग अलग होते हैं. और वाटर का है तीनों फॉर्म अवेलेबल है. वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस जिसके तीनों फॉर्म हमको अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म. So dear children, first of all, before we start our lesson, you all are going to write today's date, that is 16/12/2020, and Wednesday and classwork. Dear children, don't forget to write date and classwork and day when you start your work in notebook or workbook. Notebook and textbook. So what is the name of lesson? The water cycle. मतलब वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यूएशन में चलता है, कि जैसे बारिश हुई, फिर वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वापस गर्मी पड़ती है, पानी भाप बन के उठता है, फिर बादल बनते हैं, फिर वापस बारिश आती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर वापस जो है इस तरीके से पूरा चेन वो कंटिन्यू होता है. कि जो है पानी भाप बन के उठ जाता है, फिर वो बादल बनता है, वापस बारिश होती है, फिर वो बारिश के बाद वापस जो पानी होता है धीमे धीमे वो स्टार्ट्स अगेन इवेपोरेटिंग. तो जैसे सीज़न चेंज होता है, ठंडी में कम होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगती है वैसे जो पानी जो है भाप बन के ज़्यादा स्पीड में जो है वो क्लाउड बनता है. तो ये कंटिन्यूअस ये चेंज चलता रहता है, इसको हम साइकिल बोलते हैं. और ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं. Now we'll read this. We all drink water. It has no color, taste or smell. हम सब जो है पानी पीते हैं. You all know that what is the water is colorless and tasteless and odorless. पानी कैसा है? Colorless, tasteless और odorless है. मतलब कि इसमें कोई smell नहीं है, कोई color नहीं है और कोई taste नहीं है. That we have already read. And we all drink water because you all know that without water no life is possible on the earth. It has no color, taste or smell. Water is found in 3 forms: solid, liquid and gas. So what are the 3 states of water? That is liquid, solid and gas. 3 forms हैं. Now water changes its form. How do the water changes its form? Look at the different forms of water. Now you can see here in the picture different forms of water are given here. Now this is the gas. Now I change into gas on heating. Now this you might have seen many a times that when you boil the water on a gas stove, you can see that when the water starts boiling, you can see the steam that goes up into the air. जब आप पानी गर्म करने को रखते हैं गैस स्टव के ऊपर, तो जब पानी गर्म होना, उबलना शुरू होता है, तो उसमें से भाप यानी कि स्टीम निकलती है. So that steam is the gaseous form of water. वो पानी ही जो है वो भाप बन के उड़ता है. तो जो स्टीम है, ये जो भाप है, वो पानी का गैशियस फॉर्म है, उसको हम गैशियस फॉर्म बोलते हैं, या पानी जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज द सॉलिड. आई चेंज इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग. दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. मतलब जो पानी होता है, ये तो आप सबको पता है कि पानी है, तो अगर हम उसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो आफ्टर फ्यू आवर्स दैट
जो है पानी फ्रीज हो जाता है, दैट वाटर फ्रीजेस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू आइस. सो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस जो है एकदम हार्ड हो जाता है, एंड व्हेन यू टेक इट बैक, take out from the freezer and keep it on the table or at the room temperature, then after some times the ice starts melting. So again it gets converted into water, which is the liquid form. अगर आइस को आप थोड़ी देर बाहर रखेंगे फ्रिज से निकाल के, तो धीमे धीमे क्या होता है, आइस पिघलने लगता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड देन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. और यही दैट वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, जो है वही वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है पानी का. नाउ सो द आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर सोटेनियर आई चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. ये जो स्टीम है, as you have seen this steam, when you cover this water, when it is boiling, you cover it with a lid. तो कोई भी गर्म चीज़ जब अगर हम ढक के रखते हैं, तो जो भाप होती है इसके अंदर से निकलती है, वो भाप कहाँ पर जाती है, इस लिड के ऊपर, यानी कि इस ढक्कन के ऊपर जाती है. और देन दिस स्टीम व्हेन इट कूल्स इट चेंज इनटू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स. तो छोटे छोटे पानी की बूंदें जो हैं इस लिड के अंदर आप देख सकते हैं. यू कैन सी दिस ईजीली. जब भी आपकी मम्मी खाना बनाती है और गरम तो वो ढकती है, तो अब थोड़ी देर बाद आप जो जाके उस ढक्कन को या लिड को चेक करेंगे, तो उसके अंदर की साइड पे आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पानी की बूंदें होंगी. तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज विच गैस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो व्हेन इट कूल्स डाउन, दिस गैस और द स्टीम व्हेन कूल्स डाउन, इट कन्वर्ट्स बैक अगेन इनटू water, that is the liquid form. So the three states of the water are liquid, solid and gas. Now water is liquid form is very important for all living things. It is used for drinking, bathing, swimming, washing, etc. Now water, as we use the water in the liquid form only. In other forms, the majority of the use of water is done in the liquid form only, or we can say that we use the water in its liquid form only. Solid and gaseous forms are not. Solid form, the ice we use sometimes in the summer, but it's very little use of water in the solid form. In gaseous form there is no use of water. It is mainly the liquid form, or we can say the liquid form is very necessary of the water, because that liquid form only we use for doing all the activities of our life, like drinking, bathing, swimming, washing, cooking. ये सारी चीज़ें जो है कैसे होगी, अगर पानी का liquid form होगा. If liquid form is not there, then we cannot do any of such activities. Now we move on to page number 74. Have you ever seen steam coming out of a kettle? Steam is also called water vapor. It is the water in the form of the gas. As you all know, that I told you that when the water starts boiling, you can see the steam coming out of that water. Now that steam is the, you all know, gaseous form of water or steam. It is also called as the water vapor. हम steam को क्या किस other नाम से जानते हैं? The other name of the steam is water vapor. Why it is called as water vapor? Because water vaporizes. जो steam बनता है, vaporization होता है, इसलिए हम उसको पानी का, इसलिए हम उसको water vapor भी कहते हैं. And that steam or the water vapor is the gaseous, or is the water in the form of a gas. That means water has been converted into gas when it starts boiling. Now here Dabby wants to know, name the solid form of water found in the nature. What is the solid form of water found in the nature? It is the ice. जो बर्फ होती है, जो पहाड़ों पर भी हम देखते हैं कि नदियों में पानी कहाँ से आता है. So that water is comes into the rivers when the ice melts on the mountains, and that turns into the river that flows down onto the land. जो पहाड़ों से नदियाँ उतरती हैं, वो पहाड़ों में जो बर्फ होता है वो पिघलता है, और पिघलते पिघलते वो नदी में कन्वर्ट होता है. A container with water and keep it on the freezer. Leave it for few hours. You will find that the water has changed into ice. Ice is the solid form of water. So very simple, you can do this at home. आपने देखा ही होगा, क्योंकि सबके घर में फ्रिज है आजकल. Everybody has got the refrigerator. So when you keep the water in the refrigerator for few hours, then it converts it into ice. So that ice is the solid form of water. Now dear children, I have underlined few lines in this in your textbook. These lines you also have to underline in your textbook also, because these are the important lines of this lesson.
Each line tells you something new that you are going to learn in this. Little bit difficult, but you can understand. So better underline these lines in your textbook also. Now we can change from one form to another by heating or cooling. Now, water. So the forms of the water that we can change is either, see, water is, if we use the water in the liquid form as it is, but if we want to change the water into gas form or into the steam, we have to what if we want to convert water into steam, then we have to boil the water. That means we have to heat the water. And if we want ice, then we have to cool the water. That means we can change the form of water either by heating or by कूलिंग. मतलब पानी का जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे कि सॉलिड से अगर हमको लिक्विड में करना है तो उसको हमको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो अपने आप वो धीमे धीमे जो एटमॉस्फेयर की गर्मी है उससे पिघल जाएगा बर्फ़ और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर पानी को हमको सॉलिड फॉर्म में करना है तो उसको कूल करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, तो आइस बनेगा. और वही चीज़ अगर पानी को अगर हमको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमको उसको गर्म करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी हैव टू हीट दैट. So you can change the one form of or the into the another form by either by heating or by cooling. या गर्म करके या ठंडा करके पानी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड evaporation. Now, what is the change of water into water vapor on heating? जब हम पानी का फॉर्म जो चेंज करते हैं by heating, that means when we convert the liquid form of water into gas form of water by heating, it is called as evaporation. This is a new term for you, evaporation. It is called as evaporation. That means on heating, when the water converts it into steam or gas, it is called as, this process is called as evaporation. Now, change of water vapor into water on cooling is called as condensation. 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 This is also a new term for you. When that steam or the gas form of water is cooled down, it again changes into the water, and that process of cooling of steam to convert it into water is called as condensation. मतलब कि जो gaseous form of water है, जो भाप है, अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो उस process को हम condensation कहते हैं. Now, water changes into ice on cooling is called as freezing. That means when we change the water into the solid form, from liquid form of water to solid form of water, when we change, that means we have to cool the water. It's not only to cool the water, but we have to freeze that water. So that is called as the freezing of water to convert it into solid form of ice. Ice में change करने के लिए हमको water को freeze करना पड़ता है, and change of ice into water on heating is called as melting. जब ice को अगर हमको पानी में convert करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको heat करना पड़ेगा. That means we have to give a little bit of heat to that so that it can melt. So that is that process is called as melting of ice. पिघलना जिसको हम बोलते हैं ना, बर्फ का पिघलना. सो पिघलना इज मेल्टिंग, एंड दैट इज हाउ इज आइस कन्वर्टेड बाय मेल्टिंग, एंड दैट इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द हीट दैट इट गेट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. बर्फ को जमाना है, सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट करना है तो फ्रीजिंग करना है. अगर सॉलिड फॉर्म में से वाटर को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो मेल्टिंग करना है. Now know this, Dabby. With Dabby, steam is very powerful. It is used to cook food in pressure cooker. It is also used to run engines. Yes, this is very true that the steam engines were introduced by the experiment by the Wright brothers. They were just boiling the water, and when they were boiling the water, the lid suddenly went off with the pressure of the steam. तो जो पानी का जब उबल रहा था तो उसमें भाप में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो ढक्कन जो था पानी के ऊपर रखा हुआ था वो उड़ गया, एकदम ऊपर चला गया. तो दैट गेव एन आइडिया दैट द स्टीम हैज़ सो मच ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज हाउ द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वॉज डन. सो
steam has lot of power in that, and in the olden days the trains were used to run by the steam engine only. जो कोयला था उसमें से भाप बनाई जाती थी और उस स्टीम से जो है वो इंजन रन होते थे और पूरी ट्रेन उसी के थ्रू चलती थी, वो स्टीम इंजन के हेल्प से चलती थी. नॉट ओनली दैट स्टीम इंजन के अलावा अभी हम जो खाना बनाते हैं दैट वी कुक इन द प्रेशर कुकर. यू ऑल हैव सीन द प्रेशर कुकर. सो दैट pressure cooker in which we cook the food is also cooked with the help of the steam that is generated inside the cooker. जो कुकर के अंदर हम पानी डालते हैं खाना बनाने के लिए, वो पानी में से जो है वो स्टीम डेवलप होती है, एंड दैट स्टीम विद इन दैट कुकर जो है वो दैट कुक्स द फूड. सो इट इज स्टीम हैज सो मच ऑफ पावर एंड एनर्जी दैट इट कैन कुक द food and it can also run the steam engines. Now this is a whole water cycle. You can see that this is the water. This is the water. On heating it becomes steam, on cooling it again becomes water, on freezing it becomes ice, and on heating it again becomes the water. So this is called as the cycle. ये continuous process, this keeps on going. This process continues for ever and ever. So the water to steam, steam on again to water, water freezing into ice, on heating it again converts it into water. So this is called as the cycle. Now here Dabby's time is there. There's a small exercise in which you have to write answer in one word. We have studied about certain terms. New terms that we studied in this lesson is your evaporation, condensation, freezing, melting, and steam. So these are the new terms, and related to these new terms are your one word answer. Give a one word answer for the following. Change of water into water vapor on heating, that is called as evaporation, which I have already underlined. That is why I told you to underline these lines in your textbook. Then change of water on into ice on cooling, that is called as freezing. बर्फ बनती है तो कैसे बनती है? फ्रीजिंग से. देन चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, दैट इज योर मेल्टिंग. देन change of water vapor into water on cooling is called as condensation, and another name for water vapor is your steam. as यहाँ पे लिखा हुआ है ना, steam is also called the water vapor. You can underline this line also. Steam is also called as the water vapor. So underline this line also. Now dear children, I hope you have understood the three forms of water are solid, liquid and gas. Liquid, the water that we find in the natural form, पानी जैसा होता है वो natural form में वो liquid होता है. Ice is the solid form of water, and gas is the steam is the gas, or the water vapor is the gaseous form of water. Now dear children, we move on to page number 75. Here we are going to study about the complete water cycle that happens on the earth, on the rivers, ponds, lakes, how the water evaporates and becomes the cloud. 75 water cycle. Now you can see here these are the four pictures, 1 2 3 and 4. I have written the numbers also, 1 2 3 and 4, so that you can easily know that which picture is there after which. Already arrows are marked here, but to make it easy I have shown here 1 2 3 and 4. Now first we'll read it. Water cycle. The heat of the sun heats up the water of rivers, lakes, ponds and seas. Now as you all know that always the sun heats the earth. जो सन की गर्मी है, सूरज की गर्मी जो है अर्थ पे पड़ती है और उससे हमको जो है हीट मिलती है. तो यही हीट जब ज़्यादा हो जाती है तब जो रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स और सी का वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है. सम ऑफ दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस अप इन द स्काई. सो नाउ व्हाट हैपेंस is that you can see this is the water which is of the river, pond या lake. कोई भी एक water body है, जो water body means जो rivers, ponds, lakes वो सब होता है, sea होता है, उनको water bodies बोलते हैं. So as the sun falls, heat of the sun falls on this water body starts heating up. The water on the top layer of this starts getting heated up and धीमे धीमे पानी उतना गर्म होता है कि it starts rising, मतलब कि water starts evaporating. पानी जो होता है इसके ऊपर के लेयर जो होती है, जो टॉप लेयर of that it starts converting into the steam. तो ये धीमे धीमे पानी जो है आकाश में स्टीम भाप बन के ऊपर जाता है.
Some of this water changes into water vapor and rises up in the sky. So as the water starts getting heated, it starts getting converted into steam and goes up into the sky. These cool down to form the clouds with the tiny droplets of water. So as the water vapor rises up into the sky, तो उसके बाद क्या होता है, as they go up, so the atmosphere up, as they go up high, the atmosphere is cooled, so there they get condensed then and convert into the tiny droplets of water to form the clouds. Those tiny droplets come together and form a cloud. These droplets join to form a very big drop. Now those small drops together join and they become a big drop. These droplets join to become a heavy drop. The clouds cannot hold them and they fall down on the earth as in the form of rain. Now these droplets, when they go up high, they become the droplets collect themselves to form a big ड्रॉप एंड दैट दे गेट इट इनटू द क्लाउड. तो धीमे धीमे क्या होता है, जो पानी जो है भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर की जैसे ही तरफ ऊपर की तरफ जाता है आकाश की तरफ, तो वहाँ पे ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडे होते हैं. जो टेम्परेचर होता है अर्थ का और वहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, पानी कंडेंस होकर ठंडा हो जाता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. वो टाइनी ड्रॉपलेट्स सब इकट्ठे होकर एक बड़े से बादल के अंदर आ जाते हैं और बादल में इतना सारा पानी ये बादल में इकट्ठा हो जाता है. तो टाइनी ड्रॉपलेट्स becomes too heavy when they come together that the cloud cannot hold them and then they fall on the earth as rain. जब बादल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बादल उसको नहीं अपने पास रख सकता है और वो जो है बारिश बन के पानी जो है वो हमारे अर्थ पे आता है. Their water flows into rivers, lakes, etc. In the colder places, these water drops comes down in the form of snow also. So this happens in the winter season in the hilly regions, as we know that the snowfall occurs in the hilly regions. तो कब ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो when the rain comes, but it is too cold that while they come down on the earth, that drops of the rain, the water drops of the rain starts freezing and then they fall on the earth as snow. The snow melts and turns into water and flows into streams and rivers. So this snow again then turns as the season changes and the climate becomes hot. Then this snow starts melting and then they flow into the form of water into streams and rivers. Thus the water cycle in the nature continues. Water cycle is the journey of water from the earth into the sky and back to earth. सो दिस वे द वाटर साइकिल कंटिन्यूज कि ठंडी होती है तो बर्फ़ बन के पहाड़ों पे गिरता है और वही फिर बर्फ़ पिघलती है और फिर नदी में और जो है रिवर्स के अंदर वो पानी वापस बहता है और फिर गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बन के आकाश में जाता है, वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और अगेन द क्लाउड्स कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन. सो दिस इज द नेचुरल वाटर साइकिल दैट नेचर हैज़ क्रिएटेड इन दैट टू गिव अस द वाटर, टू प्रोवाइड अस विद द वाटर. अगर ऐसे वाटर साइकिल नहीं होती तो हमको पानी नहीं मिलता. जितना पानी हमारे पास होता वो पानी हम यूज़ कर लेते तो ख़त्म हो जाता, तो बाकी पानी कहाँ से आता. सो नेचर हैज़ गॉड हैज़ डन इन अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट एवरी ईयर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वी गेट वी नीड इज गिवन अस बाय द गॉड इन द फॉर्म ऑफ द रेन. इसलिए हर साल जो बारिश होती है उसका पानी फिर जो है नदियों में, तालाबों में, सब में भर जाता है और हम पूरा साल वो पानी को यूज़ करते हैं. सो यू कैन सी दैट हाउ लवली द अरेंजमेंट ऑफ द गॉड हैज़ डन फॉर अस, बट वी डोंट केयर फॉर आवर नेचर. हम अपने नेचर का उतना ध्यान ही नहीं रखते हैं. हम नदियों को गंदा करते हैं, तालाबों को गंदा करते हैं, इवन हम जो समुद्र को भी गंदा करते हैं. हम सी बीचेस पे घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पर भी गंदा करते हैं, वो जो गंदगी है वो सारी समुद्र में जाती है. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द सीज. they are not able to survive because we are polluting the sea water also now. सो डियर चिल्ड्रन, इतना लवली गॉड ने जो नेचर को हमको प्रोवाइड किया है, अगर हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में रखेंगे देन वी कैन सर्वाइव फॉर मोर लॉन्गर टाइम एंड द नेक्स्ट जनरेशंस आर गोइंग टू कम ऑल्सो कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर क्रिएटेड बाय द गॉड. I hope, dear children, you have understood the water cycle and the whole lesson. It's very easy. It's not too difficult because it is the extension of the lesson that we did, the lesson number 9.
Now here it is Dabby's time. Number the sentences in correct order. Now this is the water cycle that they have given, which comes first that you have to write. The first sentence is the heat of the sun heats up the waters of the river, lakes, etc. The second is some of this water changes into the water vapor. Then what happens after that? Water vapor rises up high in the sky. उसके बाद फोर्थ है वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स इन द विद द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड नंबर 5 is the clouds cannot hold the water droplets and they fall down in the form of the rain. So this is the proper arrangement of the sequence of how the water cycle is. पूरा water cycle कैसे चलता है उसका पूरा sequence ऐसे आएगा 3 5 1 4 and 2. Now we move on to page number 75. 75 first is your recall with Tabby. That means the entire gist of the lesson that we have studied, that what are the different forms of solid, liquid and gas, are the different forms of water changes its form on heating and cooling, what is condensation, what is evaporation, freezing and melting, and what is the water cycle. That is all given. These 7 points if you read, then also you will come to know what the lesson is all about. Now it is your exercises, Tabby's questions, that is fill in the blanks. First is your question number A. Steam is also called as water vapor. Steam को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? It's water vapor. Ice is the solid form of water. Water vapor is water in the form of a gas. The heat of the sun heats up the water of river and seas. When the cloud becomes too heavy, the water droplets fall as rain. Now next is your question number B, which is your question answer. Answer the following questions. What are the 3 forms of water? The 3 forms of water are solid, liquid and gas. What is melting? Change of ice into water on heating is called as the melting. Now in this question answers also you have to write the question answer same as I explained you in lesson number 9, that write question 1 time and answer 2 times together. Next is your question number 3, which is on page number 77. What is freezing? Change of water into ice on cooling is called freezing. What is water cycle? The journey of water from the earth to sky and back to the earth is called water cycle. What is steam? Steam is water in the form of a gas. Now next is your question C, that we are not going to discuss. Why it is not advisable to open the lid of a pan of boiling water. इसको हमको नहीं करना है. हमको जब पानी बॉईल होता है तो उसका लिड ओपन क्यों नहीं करना चाहिए, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डू फन विथ Dabby. Now complete the crossword. This is called as the crossword as we did in the last lesson. I explained that crossword. Now this is your down and this is your across. Now first you are going to write this down. You first write the answers of this so that it is easy to find out in this. You can write in this. I rise above boiling water, that is your steam, STEAM, steam. I am the solid form of water, which is your ice, ICE. I am made of tiny droplets of water, that is your cloud, CLOUD, cloud. Now across हमको ऐसे ढूंढना है. I am the journey of water from the earth to the sky and back to the earth, which is your water cycle. I fall on the earth from the clouds, that is the rain. Now dear children, first we will see down. I am the rise above boiling water. तो steam है, यहाँ पर number 1 लिखा हुआ. You can see here number 1 is written. So down like this. So STEAM, steam. And the solid form of water, ice, here it is written number 2, down like this, ICE, ice. And third is the cloud, number 3, where it is written number 3. Sorry, it's number 4, not 3, number 4. CLOUD, cloud. This is your number 4, cloud. Now we'll go across water cycle, which is your 3 नंबर. यहाँ पे 3 नंबर अक्रॉस है तो यहाँ पर 3, WATER वाटर, CYCLE साइकिल. एंड देन नेक्स्ट इज योर नंबर 5 विच इज योर रेन, RAIN, रेन. सो दिस वे यू हैव टू डू दिस क्रॉसवर्ड. ये क्रॉसवर्ड में जो ये है आप उसको टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, बट इसको आप नोटबुक में 1 टाइम एज 1 वर्ड आंसर यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट इज योर वेब चार्ट. Forms of water. Now what are the different forms of water?
solid, liquid is already given, and you have to write gas. So solid, liquid and gas are the three forms of water. So dear children, with this we come to the end of the explanation and the exercise of lesson number 10. But there are certain hard words that you have to learn in lesson number 10 that we are going to see. Now, water cycle hard words, classwork one time and homework one time. COLOUR color, SMELL smell, LIQUID liquid, then SOLID solid, GAS gas, STEAM steam, WATER water, VAPOUR vapor, FREEZER freezer, ICE ice, HEATING heating, COOLING cooling, EVAPORATION evaporation, CONDENSATION condensation, FREEZING freezing, MELTING melting, DROPLETS droplets, and WATER water, CYCLE cycle. Now dear children, in lesson number 10 you have to write lesson number 10, give one word for the following. I rise above boiling water, steam. So this way you have to write one word answer in your notebook. You don't have to draw this crossword, ये आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, पर इसको आप लिख के ऐसे वन वर्ड के फॉर्म में करेंगे. For lesson 9 also it is there. See, I have written for lesson 9 also, and for lesson 10 also you have to write like this. So dear children, we come to the end of lesson number 10. Now everything from blanks, question answers, hard words, and one word, and this web chart, everything you have to do it in your notebook. Also, question answers you have to answer, you have to write 2 times, and question 1 time. Remaining all the things you have to write it in your notebook 1 time. So dear children, till we meet on the next turn, till then, bye bye. And have a nice day, and stay at home, stay safe and stay healthy, and please wear your mask when you go out. Bye.